So are you proud of yourself? एंड स्प्रिंगबोर्ड में आई वेंट इनटू नेशनल्स वगैरह, सो दैट उसका प्रैक्टिस यूज्ड टू बी आफ्टर स्कूल. Dada Dadi used to swim My dada in still your swims. village. No, in Bombay. Oh, so you did go to Jamna Bhai. Yes. बड़े लोग. नहीं थे बड़े लोग भाई. She told me that many people were intimidated by me. That's why they would not ask me. Based on my marks, I was doing pre-meds in UK. And from there, there's a pathway to go to the Caribbean. कितना है सीटी में? मुझे नहीं पता, पर ये तो सुन. Yes. करीबियन का कुछ फोटो नहीं डाला तूने Because Instagram I पे? think एक या कुछ है, but those were the worst days of my life. From You so I did health and medical sciences advance. health and medical sciences. Advance. My dada and dadi used to live in Africa. Indian थे वो? Now तो they are giving those medicines now to lose weight, Manjaro and this that. तो कौन पसंद है ज़्यादा? Mom या dad? क्या सवाल पूछा है भाई. So we'll just end this podcast after one last topic, Yes. which is obviously 2026 December 23rd. Thank you. Good to know you. After all these After years. all these years. क्या बैठे यार दोनों ये. अभी वो चुपचाप बैठेंगे जब तक उनका खाना नहीं आएगा. खाना आएगा उनको आवाज़ आएगी ना. हाँ, उसमें गिरेगा तो वो जाएंगे खाना खाने. ये जाएगी पहले. कॉमेट तो जाता भी नहीं है. कॉमेट इज अ वियर्ड कैट. Cheers. Cheers. Welcome to the podcast. Thank you. Thanks Nida. for having me. And also this is the first podcast जहाँ मैंने थोड़ा ऐसे प्रेप किया है और मुझे नहीं करने दिया है. That's the whole point, right? ठीक है. नहीं तो तू आंसर ऐसे रट्टा मार रही होती. गाड़ी में मे भी मैं वैसे भी आंसर्स रट्टा मार रही थी. कर रही थी क्या? पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है. क्या सोचा तूने? मैंने इतना भी नहीं सोचा कुछ. हम्म. पर तू पूछने क्या वाला है? नहीं पूछने तो कुछ नहीं वाला. But yes, reset. Welcome to the podcast. Thank you. Today is the 24th of March, 2026. Yes. What a time to be alive. That is true. In a good way. No, war भी चल रहा है वैसे. And पेट्रोल the का war प्राइस पता है तुझे? it's हाँ मतलब finally the war has got to us. अब तक वॉर होते थे वहाँ पर हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि this time it has directly impacted us and it's going to impact our parents as well. It has already impacted them, right? Yeah, my kaka in Bangalore doesn't have gas. Doesn't have I'm gas. laughing, but this is concern wala laugh. Correct. So they are cooking how? Induction. I don't know what they are doing, but induction हाँ है. बटन खोल दिया भाई मैंने बहुत खा के आया हूँ. क्या But था? anyway, welcome for the third time. Thanks. I think You think? that you are a very interesting personality. Why? I'll tell you why. Okay. Because you're cute. Thanks. You are very kind-hearted. Thanks. You are very humble. रोलाएगा क्या भाई? रोले रोले पॉट पे फर्स्ट क्राई. Slow zoom तेरे मुंह पे. But I mean this. You are very humble. you. You're very considerate of everyone around you. That's what I like about you. Thank you. You're very Lily. Don't drop the tripod, Lily. I don't think Lily का weight उतना है भी कि वो गिरेगा. सुन ले. You're very logical. ऐसा बहुत rare हुआ है कि I don't think I've ever thought कि she's behaving irrational. I've become, trust You me. have now. Now. We don't hang out much. Huh? Since the last No, few not days. irrational. I've not. Then? Yeah, I've become logical now. Oh, like that. Like that. Correct. Which is a good thing. Yeah. And you're smart, you're intelligent, you've become a physio, Thanks. full-fledged Yes. physio. So are you proud of yourself? I am proud. I forget to, like, we all forget to be proud, I feel. That's Sometimes, true. don't you think? We I do, think we all do. should be proud, yeah. We have to remind ourselves to be proud of ourselves. Yeah. क्योंकि now you got my perspective of how I think about you. Sometimes we need that कि कोई आके बोले. Like usually it's our partners. है ना मतलब partners तो true. motivate करते ही है. But yeah, I am very proud of you. We are very proud of you. तो किल तो तू कर रही है, बट कैसा चल रहा है? जॉब चल रहा है बस भाई, धीरे धीरे चल रहा है. कैसा है तेरा फिजियो का जॉब, कैसा चल रहा है? फिजियो तो अच्छा है अभी. एज केयर, आई लव इट. चचा बुड्ढे चच्चियों लोग की, हैं। आई लव देम भाई, दे आर माय फेवरेट. इट इज डेफिनेटली वेरी
Beep. I'll Beep. put- It's very nice and all, but it also takes an emotional toll sometimes because we see a lot of death. Do you? Yeah, you get very close to a lot of them. No. So retirement village is when they are more mobile, like they can walk and all. They are Correct. more independent. 5 स्टार जैसा लाइफ हाँ. होता है उनका. And aged care is more when like you'll have a range of people who have more serious illnesses or dementia and That's where you are. yeah, or Oh, like then yeah. it can be hard. Yeah, we have special units also with people with dementia in it. And you treat physio needs, Yeah, जिनको जो भी है. We do a lot of exercise. And you have rehab. a team leader, and then you are then Then you we are all are there. Yeah, there's not too many levels. Yeah, experience wise, obviously I mean technically this is my second year only. okay, nice. Only But- नहीं सही है. Yes. You graduated when? 2024 और तेरे को जॉब लगा कब? तुरंत क्योंकि मैंने Crazy. प्लेसमेंट किया अपना लास्ट प्लेसमेंट एंड दे ऑफर्ड मी अ जॉब. Crazy. Good one. वेरी good one, ग्रेटफुल good one, good क्योंकि one. आई नो बहुत मेहनत लगती है जॉब ढूंढने में वरना. हम्म. सो वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने ठीक जॉब है ठीक किया. है. थोड़ा we'll roll back the Yes. years. We'll go all the way Sure. back. I would love to know. हम्म. कौन सी स्कूल गई थी तू? मैं You are from Santa Cruz? यस East West? वेस्ट. Where? Link Road कहाँ पर है? मैं एसवी रोड और लिंकिंग रोड के बीच में रहती Okay. हूँ लाइक School क्या है तेरा? I think you've told me, but confirm So it. it's a lot. So I started in Arya Vidya Mandir, Santa Cruz, ठीक है, which was only girls' school. Okay. Then they had this whole big thing, and they said now we need to merge Santa Cruz branch and Bandra West branch. Okay. And Arya they- Vidya, yeah. Vidya Mandir. Yeah, की. so third nursery to third became in Santa Cruz, and फिर you go to Bandra West. So obviously from like 4th standard to my 10th was in Bandra West in a co-ed school then. Okay. So that was a वही co-ed. आर्या विद्या मंदिर. हाँ, तो उनके बहुत है. तो बैंड्रा वेस्ट तू जाती थी सैंटा क्रूज से? हाँ, इतना दूर नहीं था क्योंकि मेरा खार swimming- खार बैंड्रा. हाँ, और मेरा स्विमिंग जहाँ पे मैं करती थी वो पास में ही था ऑटर्स क्लब. तो इट वाज लाइक Okay. 5 minutes फ्रॉम माय स्कूल. बिफोर स्कूल आफ्टर स्कूल? Oh God, when I was swimming, we used to wake up at 5 a.m. सुबह. Shout out to mom for making all my boiled eggs and हाँ, milk and every. crazy. My mom has done a lot. Crazy. We would go 5 o'clock practice and all that. कभी ऐसा that thought would never come to your mind कि fuck 5 a.m. है. You would just wake up like that, right? Easy as. है ना? Easy as. But Especially if you went to sports. पर फिर मैं सोती भी 8 बजे थी ना. सच्ची? सच्ची. इंडिया में? सच्ची. तू बिल्डिंग में रहती थी? बिल्डिंग में रहती थी. 8 बजे कैसे सोती 8 थी? बजे building सो में? जाती थी. अरे इतना कि भाई. कभी कभी मेरे को खाते खाते ही मैं सो जाती थी टीवी देखते सच्ची? देखते क्योंकि थक जाती थी स्कूल. ट्यूशन नहीं जाती थी तू? तो दैट वाज लेट. दिस इज स्टार्टिंग. फिर ट्यूशन केम लेटर. तो जब आई स्टार्टेड डाइविंग, स्विमिंग मैंने कुछ टाइम तक किया. हाँ. देन आई वेंट इनटू स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग एंड स्प्रिंग बोर्ड में आई वेंट इनटू नेशनल्स वगैरह. सो दैट उसका प्रैक्टिस यूज्ड टू बी आफ्टर स्कूल. तो मैं स्कूल से सीधा प्रैक्टिस जाती थी. 9 बजे खत्म कर. आफ्टर स्कूल? हाँ. सो बाद में? हाँ. What standard? Like 8th standard I started So you've diving. been swimming for a lot of your school Swimming I years. started when I was like 3 years old or 5 years old or something. Hello brother. What's Fiancé up? is here. कैसा है Don't भाई? disturb. हाँ? Fiancé. Fiancé. ओहो. Not blushing at all, Vicky. Anyways. तू आके बैठ सकता है? हम तो बात कर ही रहे मस्त. Yes. हाँ, उनको खाना दे देते हैं. खाना दे. हाँ फिर? So like I was You were very young. swimming and Because my dada dadi used to swim, so they used to take me when I was. दादा दादी used to swim My dada in still your swims. village. No, in Bombay, bro. अरे भाई. My dada still swims in Okay. Bombay. He's हाँ. 87. Fuck. Swims properly. Proper Because laps. he's been swimming. He's very good at swimming Laps, now. he does laps. And so he must be very healthy. Yeah, 6 This a.m. is he your goes. dad's dad. Yeah, he goes 6 a.m. every morning swimming. Fuck, what a great thing to like hold on to for the rest of your life. Yeah, so we do that. Much better than gym and all that. है ना? He does his thing. Every morning he'll take the car and go. Crazy. Okay, तो एक सेकेंड. तू सुबह 5 बजे उठ के स्विमिंग जाती थी? This was swimming time पे. When I was swimming. स्विमिंग सुबह जाती थी और फिर स्कूल जाती थी वहीं से डायरेक्ट. हाँ, स्विमिंग से Bandra डायरेक्ट. West हाँ, वाला. तो मॉम वुड कीप बॉइल्ड तो एग्स. तेरे कोई लेक्चर मिस होते थे? फर्स्ट लेक्चर, सेकंड नहीं लेक्चर की टाइम वी पे? यूज्ड टू मेक इट ऑन टाइम. लेकिन अब जब कंपटीशन का टाइम आता था वी यूज्ड टू टेक स्पेशल परमिशन स्कूल से कि हम आधा घंटा लेट पहुंचेंगे. ओके. आफ्टर प्रैक्टिस. हाँ. और फिर स्कूल के बीच में भी कंपटीशन के लिए निकल जाते थे? समटाइम्स जब स्कूल का कंपटीशन होता था हाँ या फिर हाँ वी यूज्ड टू गो. बहुत अमेजिंग फीलिंग होता है ना. वो लोग आके Next बोलते थे level. एवरीवन पार्टिसिपेटिंग कम नाउ. हाँ भाई. Wow. And you have to just leave. Yeah, and everyone studying.
हमें कौन सा टेंशन है, कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा नेक्स्ट आने वाला है, you're just gone. I'm gone. And there's that level of a feeling. क्या? नहीं, thanks bro, thanks. No, Oh, I'm she's having drinking one. something. वो that feeling is next level in your heart also कि I am a sports player, I am Yeah. going. Everyone here is just normal. Not gonna lie. थोड़ा तो अच्छा लगता था. हाँ, तो फिर ओके कैसे आए हम स्कूल? ओके हाँ. तो 10th स्टैंडर्ड तक तू आर्या विद्या मंदिर में ही थी? हाँ, then एसएससी सीबीएसई ICSE. आईसीएसई बोर्ड विच इज दिल्ली बोर्ड ऐसा कुछ होता है ना? आईसीएसई इज Whatever it I is. don't know. जो किया है शेक्सपियर वगैरह वो कराते हैं ना. तो तेरा स्कूल वाज इट लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से वाज इट लाइक रिच किड्स और A वेयर mixture of everything. Everything. Like middle class, upper middle class. Not rich as such. Rich came in 11th, 12th, where you felt little out of place. वील कम देयर. Yeah. पर मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों आज मैं सोच रहा था ऑब्वियसली दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे और मेरे को लग रहा था ऐसा तूने कभी मुझे बोला है कि यू स्टडीड इन नरसी नहीं सॉरी दिस कौन सी है वो? जमुना That is 11th, 12th. I did in Jamna Bai. Which was schooling or college? School only, but like 11th, 12th. I So didn't you go to- have done Jamna Bai. Yeah. अभी तूने आर्या विद्या मंदिर बोला 10 तक तो मुझे लगा तूने नहीं किया है और मैं ओके तो I तूने have, but you had I told was, me. imagine, I was in science, Jamna Bai, no time for anything. Science. Yeah. स्कूल ही था ना पर 11 12 भी स्कूल यूजुअली इज जूनियर कॉलेज राइट हमारे So, वहाँ. but how you choose now? You want to do commerce, Correct. humanities, So or that's science? how you chose that. Yeah, but School we did uniform था? ISC. हाँ, था. So you didn't go junior college. No, but it's same. Like I had physics, chemistry, Maths. but I didn't take maths. I took psychology. Psychology. हाँ, and Oh, biology. so you did go to Jamna Bai. Yes. बड़े लोग. नहीं थे बड़े लोग भाई मैं कहाँ भाई टाइम का जमुना था. बाई वाले. अरे Let's be fuck. very That's some- no. ऐसा notion है मैं I was from. Let's be honest. Jamna Bai's fees was less than Podar at that time. Okay. Okay. Yeah. But there's this, see, I've gone to Rustamji International School in Daisar West. For us, there's this image. It was. Juhu, It was. Then all Jamna these Bai. other like now Singapore school, French school. हाँ. Then Dhirubai Singapore came. is in Daisar only. So see now, wow, the Dhirubai Ambani and all now is there. Dhirubai, Jamna Bai Bandra. was when we were much younger. Jamna Bai क्यों वहाँ was पे now. ये एक्टर वैक्टर के लोग बच्चे आते थे ना अभिषेक बच्चन तभी वो लोग फिर सीधा वैसे. सब धीरूभाई चले गए ना अभी. बट ऑल्सो मैंने 11 12 नेशनल्स में किया बैंड्रा हाँ। तो वी वुड फुटबॉल खेलने जाते थे जब मैचेस होते थे. दोस किड्स आर अ बिट डिफरेंट लाइक My friend फ्रॉम was वेयर in आई nationals. go to national. So from where I come in, when I used to play against these kids from Juhu, there was, I don't know, they were different. The way they spoke, there was this accent, heavy English accent, or thoda ek class. Do you think I have a heavy English accent? No, Vignesh, you are not part of the podcast, so why are you commenting? no. Yeah, so I think there are all types. But of also तू 11 12th में गई. हाँ, and there are a lot of अगर type तू of फर्स्ट स्टैंडर्ड से होती शायद तेरा होता. थोड़ा वैसा होता थोड़ा. You never know. क्योंकि नेशनल्स में आए थे जमुना बाई वाले भी. They, I don't know, अरे they यार. behave like Sobo. You think that even we thought when we went from Arya Vidya Mandir and other people come from other schools, like my friends, close friends were from Ryan International, from JML, और Correct. हम लोग को भी culture shock ही था. I remember my first freshers there. And I was a very 11th good girl, standard. like till 10th. Because Good girl मतलब क्या like होता कुछ है? नहीं था. I didn't have a boyfriend or anything. till 10. I did not even 11th, 12th. Okay. I was too busy, like too much, like studying and sports के बीच में time नहीं था मेरे पास. To Which be is a very good honest. life to have. Okay, that पढ़ाई time करो, it sucked. sports खेलो नहीं, and- that time it was like wow, सब मम्मा मजे कर रहे हैं मैं. When you grow up, you realize I'm so glad I was out of. Correct. You know, I was doing my stuff that time. So you had all girlfriends or you No, I had had guy mixed- friends mixed, also. huh? I was part of like all groups, but I was also I didn't have anyone. I had a few close friends, but You because were I part was of all the groups, okay. like a little bit, yeah. But did you get proposed? No, nah. So later on, now I didn't get proposed, and Background music देखो भाई. recently when I went to India, I met one of my friends from there, and she told me that many people were intimidated by me. That's why they would not ask me. हाँ ऐसा तू क्या करती थी? पता नहीं यार, अभी I wish मैं वैसी थी. Biggie, were you intimidated? Yes. I don't think so. Were you? Really? You think? No, yeah. So guys were intimidated by you That's what in somebody Arya told Vidya me. Mandir and Jamna Bai. Jamna Bai, nobody had time. हाँ, Jamna correct, ISC correct. science was cutthroat tough. No time. I don't think I और- genuinely wanted someone also that. क्या like what was the pressure in 11th 12th कि what did you have to do like जैसे for me it was
11-12 I was doing PCM and CET क्रैक करना था to get into an engineering college. तो तेरे लिए क्या तो था? मेरा भी CET था, बट क्या होता है CET के लिए there are CET is महाराष्ट्र बोर्ड. हाँ, so people it's mostly the HSC, like you know, and the people आजकल तो वो सब होते हैं ना courses जो people सही में जाते हैं वहाँ पे हाँ, करने just to study for the CET. Their junior college is the course. Correct. But now I went to ISC, so I'm like I have to juggle ISC also, I have to juggle CET prep also. Okay. तो ये सब प्रेशर था ना, न्यू कि मुझे बायो के फील्ड में ही कुछ करना है. Okay. और इंडिया में क्या यू थिंक कि मेडिसिन Doctor. या एंड आई वाज ठीक है तब तक. आई थॉट आई विल डू इट. But your dad's a dentist. Yeah. Your mom's a gynec. You're highly inclined towards medical science anyway. Yeah, I was. तो तेरा भी ऐसा ही था. हाँ, and I enjoyed Your biology. parents, okay, and your parents thought, okay, she'll. There was no pressure from my parents ever. Yeah, they're It very was never cool. like we are doctors, so you have to be doctors. But it They was were like very ठीक है. cool, but. So yeah. But you were good at it, so you liked it, so you were going that way. Yeah. Bio, okay, 11-12. Did Sports 11-12. that. नहीं ना 10th के छोड़ बाद. दिया. Diving, no diving. Shit. But this diving bit is very cool. तूने nationals मतलब कहाँ जाती थी तू? Like height भी उसमें अलग होता है competition में. हाँ, मैंने You know, 1 meter boards, and 3 meter ही किया है. which is very small. Yeah. And I've competed in one, but imagine in that 1 meter का space you have to do like 1.5 somersaults, Oh, one twist, and all they of that. check your form and Everything, you're landing inside everything, the yeah. water. Oh, nice. Yeah, तो I did that. इसलिए ही तेरा जो सेकेंड वाली पे से वो जंप है वो डाइव ऐसे एकदम परफेक्ट आया तेरा डाइव मछली की तरह. आई कैन नेवर डू दैट डाइव. मेरे को स्विम, इफ यू आस्क मी टू स्विम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आई कैन स्विम बेसिक एंड बैक स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक. डाइविंग में पता नहीं मेरा बॉडी खुल जाता है पूरा. प्रैक्टिस से ही आया. Many, but normal people also do who haven't competed. I've seen people diving properly, but that's another thing. But सही है. फिर how the तो 12th के बाद फिर did you go to Ireland? No. 12th के बाद I went to UK. Okay. So I'll explain. This is the whole thing. CET के लिए you were So prepping. I've given CET. कितना है CET में? मुझे नहीं पता, पर ये तो सुन. अरे सुन तो लो. This year, the year we had to give CET. हाँ. वो रूल आ गया कि वो क्या था अपना यार. क्या? नीट वापस आ गया उसी साल. नीट तो मेडिकल के लिए था. CET was for engineering. नहीं, गर्दन दुख CET गई was- तेरे को ऐसे देखते. तो कैसे बैठूं? थोड़ा नहीं ऐसे देख के बात कर रहा हूँ. बोल. हाँ. अरे दुख गई सच में. हाँ. ओके. CET हाँ. was for medicine also. No. Yes. CET was for engineering. अरे यार. CET is for medicine also. तू क्या करेक्ट बोल रहा है? अरे it is. Okay, I didn't. Maybe I don't know. हाँ. तो ये नीट See, का. हाँ. maybe it is. Yes. PCB. Yeah. That's what I'm telling you. Thanks. हाँ. But ये सब दिया मैंने. PCM and PCB. एंड हाँ. ये सब लाइक चक्कर में आई जस्ट वाज लाइक ये नहीं हो Oh, पाएगा. हाँ एकदम वो हो हिल गया. गया था सब. But 12th also तेरे को देनी थी. हाँ, बट 12th लकीली मुझे standard. 12th में अच्छे नंबर आए. 12th में अच्छे आए. परसेंटेज हाँ. कितने आए? 90.4. भाई मैंने जो पॉडकास्ट के स्टार्ट में इंटेलिजेंट बोला वो तूने हाईलाइट करके स्टैंप लगा दिया है. गुड जॉब. क्रेजी. तो 10th तू बोलती 90 में बोलता ओके ग्रेट. 12th में 90.4. फक क्रेजी. सो देन लैट हेल्प्ड टू 10th में कितना है वैसे? 85 87. ओके क्रेजी भाई. यू गाइस पॉडकास्ट पे जाने वाला है ये बे. उसका पता नहीं कितना ही आएगा बट ठीक है. क्या 10वीं के बता रहे हैं या 12वीं के? 10वीं में कितने हैं? 50. और पता है इसने अपने मेरे मॉम डैड को ये पहले बात बोली. कि मेरे को 10 में 50. बट माय मॉम डैड वाज चिल. दे आर लाइक सी विकी नोबडी आस्क्स अबाउट दैट नाउ इन लाइफ राइट. 10 के परसेंटेज तो वेस्ट ही है भाई. बट क्या कर रहा था तू 10th में 50? डू यू एक्चुअली वांट टू नो? ओह या यू नो व्हाट वीडियो? अरे ब्रो. अरे वो तो मैं भी देख रहा था भाई. एनीवे हाँ. तो 12th में तो तूने किल कर दिया. फिर 12th में हाँ फिर देन आई थॉट ओके आई विल गो आउट ट्राई गोइंग आउट फॉर मेडिसिन एंड आई थॉट कि मुझे बाहर really, जाना. but you have to give some exam. No, you can't just So fly that's out. what the thing was. You can, based on my marks, I was doing pre-meds in UK. And from there, there's a pathway to go to the Caribbean. Caribbean. And from the Caribbean, you give your US MLEs and go to the US. This is the whole system.
कैरेबियन क्या है? कैरेबियन आइलैंड? Yes, Grenada, man. कहाँ पे आता है कैरेबियन आइलैंड? West Indies. अफ्रीका? West Indies. वेस्ट इंडीज? Yes. सो यू विल गो टू यूके, Then Caribbean. कैरेबियन? Yes, and then US. कैरेबियन में पढ़ाई करेगी? Yes, वहाँ मैंने किया है. फक, बता यूके गई फिर? UK was the best. So you got admitted into a college in UK. Yeah. No, so it based was- on your 90%. So it was a whole thing. The Caribbean ka college has a tie-up with the UK college. So Okay. you can choose either to do your pre-med in the UK college or in Grenada itself Okay. and continue in Grenada. Okay. Or you do 1 year there in UK and then come to Grenada. Okay. So I chose UK because why not? Let's live Of 1 course. year in UK. Of course. It was a blast. best How memories. much? 1 year? 8 months, yeah. Okay, crazy. Best memories of my life. Why you made good friends and Good you partied? friends, lot of partying. Not. How old were you? I was 17 when I left home. Fuck. Yes, That's I turned so my young. 18th birthday was in UK. That is so young. Yes. And you were like such a tiny little girl. Like you were thin and Yeah, you remember? no, Even I here I was thin. scrolled your Instagram. हाँ, but तू कितनी, हाँ, here also you were thin, but you were like such a little girl going there. Yeah. Guts थे तेरे में. It was not easy. I've cried a lot. First, When you go there? first When you went semester there? in UK, तो not only me, the friends with me were also crying. यहाँ से Because गए थे all- लोग? हाँ, सब same age group थे हम सब. पर तेरे जमुना भाई के नहीं गए थे? नहीं. Okay. That the guy who जो course का बोला था, he said that these people are gonna be But you were studying what? Medical? pre-med To become what? to become a doctor. Okay, that's what you started your journey Yeah. as. Okay. फिर 8 months बाद you went to Caribbean? Caribbean, yes. Caribbean का कुछ फोटो नहीं डाला तूने Because Instagram I पे? think एक या कुछ है, but those were the worst days of my life. From best क्यों? straight down. क्यों? Because it was very, very competitive. I mean, many people, hats off to them who've done it, who made it through. Good. हाँ. It was But not USA for me. कब जाना था? After finishing? So you basically what जो तुम 4 साल में पढ़ते हो हाँ. in a normal medical degree, they make you do it in 2 years and then you start giving the US exams to go and do your clinicals in US. 4 साल का 2 साल में पढ़ा था? Kind of. So every 2 Okay. weeks we had major exams and the passing was 75%. Oh shit. So it started This getting is- quite stressful and just a lot, and you're growing up also same time pe, imagine. And Correct. there what happens in US, you have to do your pre-med 4 साल का and then go into medicine. So वापस बोलिए क्या US? in US you have to do pre-med 4 साल. Again after Caribbean? No. 2 So साल if you are in Caribbean? US only, like if you're a US citizen, you have to study 3 or 4 years pre-med and then you come into your doctor degree. Okay. So people who were with me in that same degree were like in their 20s, already in their mid 20s, 30s and all, because we had done already 4 years bachelors and we all Okay. were just like straight out. फिर? So it was very hard. फिर? क्या, then I got majorly depressed. In Caribbean? Yeah. And you were single and depressed? I wasn't single, but Oh, you were not single no. then? Vicky, you don't mind, right? What the? He will not mind. He has dated too many girls. Yeah, I was not single. Okay. But there also things were happening even in relationship, and you know how your first You were so relationship. young. First, and that was my first Fuck. serious relationship. So. Shit. Anyways, but the study pressure was a lot, and even seeing my friends go through a lot of pressure. Basically, we saw a lot there, and then I just told mom, dad that this is not, For me. And The they were course is not for you, or the fucking Caribbeans is not for Caribbean's not for me. I was not in a mindset to even think whether, you start questioning, do I need to become a doctor as well? you? Correct. So And then, you're so young too. Yeah. You are trying to process. And very grateful. My parents were very supportive. हाँ. And they said, okay, you've tried. And it was a lot of money as well, financially. And why do I burden my why do I burden financially on Correct. everybody? And I was like, I So don't want to waste. you honestly told them I feel this, and they accepted Honestly, it. with heavy Lot tears of and crying. complete depressed. लड़की थी तो जल्दी वो हो जाते क्या? Parents मान जाते हैं. No. So I But went your once. parents are only like that. I came back and tried also. I went back for winter break to India. Huh. I was like, I don't think I can do it. They said, okay, give it some more time. Okay. And we'll agree, just give it one more try. Correct. नहीं हुआ, I left. That's a good way to look at things. Take a break, try. फिर भी नहीं होता तो Yeah. सही है यार. And then I came. Your parents are very cool. Yeah, I mean, they're quite supportive. है ना? सब थोड़ी ऐसे बोल पाते कि भाई कोर्स नहीं करना है. Some people might have had the pressure कि that's the only I way. just You think can't they saw say me at a very, 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 bad. very
Did they know you were dating? Yeah, my mom knew and my dad also knew. Okay. They knew. So how much percentage was the depression because of the whole medical thing? It was majority medical. Okay. और फिर यूएसए तो फिर गई नहीं क्योंकि इधर से And कितना टाइम किया I'm glad. कितना टाइम किया ऑफ कोर्स यू आर हियर क्या हाँ फिर कितने टाइम थी कैरेबियन Again, like 6 to 8 months maybe. ओके एंड दिस इज कैरेबियन आइलैंड Yes. कंट्री कौन सी आती है ये Grenada is the name of the ग्रेनेडा country. इज द कंट्री It is such a small country. You can go आधे घंटे में from one side to the other side of दैट्स the हाउ island. स्मॉल द कंट्री इज Yes, and if you go, तेरे को कहीं और बैठना है? नहीं ये सही है अच्छा. स्ट्रेट If you want to go to the theater, movie theater, it's first come first serve. So you just buy a ticket, but there's no seat number. हाँ You just buy a ticket and you land up there. And जहाँ पे seat मिले you sit. what type of people live there black Yeah, okay African American, yes. अफ्रीका पर आई वुड नॉट थिंक कैरेबियन में मेडिकल कॉलेज क्यों है लाइक इतने हैं पता है. All the islands have. Saint Lucia has a medical college. Antigua has a medical college. why Saint Lucia aren't has. they like Hawaii or fucking Mauritius No, कि Dominican जाओ पार्टी Republic करो has. नहीं. So that's the thing. If you go for a holiday, it's an amazing place. But if you live there, it's very very hard. सावन मुझे बहुत cost बुरा of लग रहा है. मैं तेरे लिए बोला नेक पे. अरे मेरे नेक के इश्यूज है यार तेरे को नहीं मैंने 2 महीने पहले कॉल किया तो था किधर चेंज कर लेते हैं ना लाइक क्या क्विक क्या एडिट कट एंड चेंज द कहाँ बैठूं मैं ऐसे बैठ जा ताकि उस साइड देखे. नहीं ये सही है तो नहीं आई एम बेटर देन बिफोर लाइक इससे मेरा यार फोन में भी ऐसे देखते रहता हूँ मेरी गर्दन आई एम फाइटिंग विद माई सेल्फ कि अभी टॉयलेट फोन मत लेके दुख रही है फिर एक बार वो चले गया फिर हम लगा गर्दन या तो सही फोन है ऐसे करके देख. आई फकिंग ट्राई ऑल ऑफ इट अभी मैंने कवर ही हटा दिया है टू रिड्यूस द वेट ऑफ द ओ भाई. फोन ऑन माई हैंड इसका तो सही है हल्का फुल्का हाँ तो फिर पर कैरेबियन में तो लाइफ मतलब विजुअली इट मस्ट बी अ ग्रेट प्लेस राइट Good to ग्रेट go for holiday. ओशंस Go. ग्रेट Yeah. ओशंस एंड Very pretty. मेडिकल आई वुड नेवर इमेजिन मुझे आज पता चला है कि लोग वहाँ मेडिकल पढ़ाई हाँ, करने because जाके that's a डिप्रेस हो route. रहे हैं भाई It's a route to go to the US. ओह यूके से स्टार्ट होगा ऐसे तो बेसिकली आर सेइंग मेनी पीपल हैव फॉलोड दिस पाथ Yeah, दे many वेंट टू द यूके देन yeah. दे वेंट टू कैरिबियन देन दे वेंट टू Yeah. यूएस And many who could manage it, hats off to them, they made it. some people Some of my must friends obviously also did. They managed. they are doctors now Yeah. I mean, they're on their way. GPs और स्पेशलाइजेशन वो तो बाद में डिसाइड बाद होता में है फिर तो रेसिडेंसी करना पड़ता है. खत्म इट्स ही अ नहीं होता है. लॉन्ग फकिंग पाथ मैं उसी चीज का मेरे को बचपन से ऐसे डर था कि भाई कितना लाइक इट्स सच अ लॉन्ग पाथ I realized in इंडिया में Grenada- भी इंडिया इवन इफ यू India आर also, बिकमिंग yeah. अ What डॉक्टर इन mom- इंडिया mom you just studied keep going on and on and 8 on years or something of her life. हाँ. She said. Yes. that's what your mom did some people make it my friend is a male friend he's a gynac in US Oh. now that's hard right It is लड़का gynac But now many it's okay guys USA are में there. it must be much better इंडिया में भी है मेल. मूवी आई थी ना डॉक्टर आयुष्मान की कुछ विगी विल नो. डॉक्टर जी डॉक्टर व्हाट. आयुष्मान की मूवी आई थी ना देख. सही है फिर वापस आ गई तू इंडिया फिर इंडिया आई एंड देन इट वाज लाइक तो नेक्स्ट एक प्लान ऑफ एक एक्शन. 1.5 साल वेस्ट हो गया इंडियन वेस्ट मतलब Waste नहीं, I think I grew a lot like 100% but there was Waste more मतलब- growing to do in Australia. the good thing is your parents don't think it's a waste otherwise in most cases parents take the pressure कि the society thinks that ये तो छोड़ के आ गया ये वेस्ट करके आया ना and then the parents pass on that pressure on the kid Luckily, all the people who's like surrounding like me, like my family friends, parents friends, they all are very relaxed. that अच्छा way. सा अच्छी सोसाइटी में पली बड़ी है तू फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे आई फिर it was a decision that next thing I have to obviously think ना सोच समझ के जाओ अभी. हाँ. Can't waste more time and like effort and money. वेस्ट No, won't use the word waste. Sorry, but फिर I thought I want to do something broad, still in science and biology because that's my interest. I didn't hate that. Please मुझे बुरा लग रहा है सावन तेरे नहीं, सही neck का. सही है Vicky, do something. हाँ बता अरे तो कैमरा उधर रहा. थोड़ी देर बाद Swap the places ना. हाँ, swap हाँ, for चल, some swap time.
हाँ. So Oh, hopefully I'm coming in the frame. fuck. Yes, you are. Okay. Much better. हाँ. So ब्रॉड देखो हाँ, साइंस में कुछ करना तो है. फिर मैंने कॉमेट. हमने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सोचा. हाँ. My dad was very honest saying Canada is freaking cold. You will not survive. करेक्ट. So ऑस्ट्रेलिया देन यूनीज देखे वगैरह. यूनी एडलेड हैड द परफेक्ट कोर्स. लाइक मुझे मैथ्स वैथ्स नहीं करना था फिर से. एंड एवरी अदर यूनी वाज लाइक यू हैव टू डू मैथ्स बिफोर यू गो इनटू एनी अदर बट कोर्स. कोर्स तूने फिजियो, So I did health and medical sciences advanced. हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस Advanced. एडवांस. Bachelor's. at That was the uni- name of the course. Yeah, University of Adelaide. And I had so many different ऑप्शंस थे उसमें देखो कि तू व्हाट यू कैन so yeah, because you do different things. Like we did anatomy, we did physiology. एनाटॉमी Yeah. इज ओपनिंग अप. I mean, we've seen opened up. हाँ. We didn't open up, but we saw opened up. हाँ, ओके. Okay. We did, and then I took forensic as one of my electives once. So yeah, you could try different things. Forensics? Yeah, yeah. Okay. And then you end with like a How research cool. project. This was Uni Adelaide. Yeah, Your yeah. campus was City East. City West. City East, sorry. City East was your campus. yeah. अबनेस के सामने. हाँ, so easy अबनेस as. में रहती थी. एक बार तो मैं एग्जाम के लिए लेट हो गई, पता है, क्योंकि मैं जल्दी उठ के पढ़ती थी. हाँ. और फिर मैं सो गई सोच के कि मैं उठ जाऊंगी. And I'll quickly get dressed and go. Correct. और मैं लेट हो गई, but I ran, so I only missed the reading time, but I managed to finish the paper. Fuck. क्योंकि कितना लेट पहुंची? बस 15 मिनट का वो रीडिंग टाइम मिस कर दिया ना. They let me come in. They just said you'll miss reading time. That's a good place to live at, right? क्योंकि अबनेश वो नया वाला था. नया, like obviously you've seen the old one. This was new look, new everything. जिम भी बड़ा और बस सिग्नल क्रॉस किया कि यूनी आ गई. जिम तो भाई वाओ. अच्छा जिम मैं हर दिन जाती थी. हाँ, मस्त जिम था, बड़ा जिम. ये जिम से कंपेयर करे हमारे वाले अबनेश से तो मैं भी जाता था वहाँ, बट it was pretty shit. बट सही है. That's how you Came here. पर फिजियो कैसे फिर चूज किया? That was towards the end of my bachelor's. I realized I really like So the you physiology. did all these different things. Yeah, and then I finally got now that okay, this is what I want to do with the rest of my तो life. तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा? कि इंडिया लग गया में है? इंडिया में लगेगा. यहाँ पे they are not called doctors. So your mom's called a doctor. My mom Obviously. is a doctor, but Obviously physios she are called doctors in India, but not Really? here. Yeah. Not here. क्यों ऐसा? पता नहीं. इंडिया में they fought saying कि हम लोग almost same सबके पढ़ाई अपने करते अपने हैं. रूल. ओह, सही है. ये सब मेरा सवाल होने ही वाला था. फिजियो क्यों चुना? I liked that whole thing, and then I saw physio helped my mom a lot because she had a lot of knee issues and all. Your mom? Yeah. Any physios in your house? No. No. You're the first physio. Yes. Oh. I am the first physio. So that relatively new field in India, don't you think? क्रेजी. तो कौन पसंद है ज़्यादा, मॉम या डैड? क्या सवाल पूछा है भाई. दोनों पसंद है, but I'm closer to my mom. मॉम. Like we share everything. You share everything share with your mom. everything She with my knows everything. Literally everything. You look like your dad, right? Yes. Exactly. You should see our like बचपन का photo, his and mine, same. Yeah? Exact. You think I look like my dad? You've seen my dad. That's what I said right now. You look like your dad. क्योंकि मैंने तेरे बचपन की फोटो देखी ना. कहाँ देखी भाई? Bro, मैं तेरे को क्या बोला स्टार्टिंग में? मैं फर्स्ट टाइम प्रेप करके आया हूँ भाई. मेरे फेसबुक पे है आई थिंक. नहीं, तूने अपनी बहन के साथ तुम दोनों की बिफोर और आफ्टर की फोटो. ओह हाँ. बचपन थिंक कोई सम लेडी इज होल्डिंग बोथ या ऑफ यू that's my और दादी. दादी और साइड में तुम्हारी अब थोड़ी हाँ बड़े वाले. बड़ी वाली है. तो आई लुक्ड, मैंने बोला ओके इसमें से ऑब्वियसली ये वेदा है. लाइक फक Same. पापा Same. We have a birthmark also here. You can't see, but in that photo you might see it. ऐसे आ जाए. दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ओ भाई ये तो फुल डैड पे गई है. एंड देन आई सॉ अनदर थिंग ऑन योर इंस्टा वेयर कोई स्नेहा फाउंडेशन में यू वॉलंटियर. Yeah. तो आई वाज लाइक thinking कि when and why, how did you end up volunteering for that? So I think Now I'm guessing कुछ relation है your studies and नहीं है? it was I think when I was when I went back from Grenada in the middle, like one of the breaks, and then also when I went back for good. Obviously I didn't want to waste that time while I'm looking for my आगे का plans. Internship you did? It wasn't even an internship, it was just NGO, charity. Just went there. My mom and all, she used to work with one of the doctors who
is the head of this NGO. मुंबई में था ये. हाँ. Okay. And I used to come to Santa Cruz East. I used to walk on that कौन सा? station वाला. बड़ा वाला हाँ. जो एकदम बड़ा जो उसका है वो. हाँ. I used to walk. I used to go there and I used to teach. Not nurses, लेकिन there are, you know, the girls used to study to become nursing aides who would assistants to the nurses. ऐसा भी होता है. हाँ होता है ना. तो I used to teach them science. नर्सेस के भी असिस्टेंट जो लोग ऑब्वियसली थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड होंगे और who couldn't study nursing, Yeah. they can at least become aides to the nurses. Yeah, so I studied there. I taught them, and we would it was a lot of fun, and I would do data analysis and I'll also make PowerPoints for them, worksheets for them, Nice. and teach them. Teach them. And then few of them, though, we asked. My dad also employed some of them. Ah, sweet. Feels good, right? Helping. I used to love going there, and they used to, and I was similar age group to them, right? बात So they would full talk and all, and laugh and everything. It was a lot of fun. Dad का clinic का है. He's the Santa- owner of the clinic. Yeah. or He has his own clinic. Yeah, so Santa Cruz mein still. Okay. 2 clinics are there. 2 clinics he Yeah, has. so one is in Hasnabad, it's in Santa Cruz Market. That used to actually be my great grandfather's, because my great grandfather was a doctor. Okay. So he used to also work there. Your dad's dad. My dad's dad, my dada's dad. Britishers कहाँ थे ऐसे टाइम में? They were in Africa. That's a whole another story. Okay. क्या बात कर रही है भाई? My dada and dadi used to live in Africa. इंडियन थे वो? अरे क्या सवाल? गांधी जी के साथ थे क्या अफ्रीका में? नहीं. गांधी भी थे ना अफ्रीका में. 1800s की बात हो रही है ये एंड में. बहुत इंडियन शायद थे क्या तभी अफ्रीका में? 1930s में my dada was. Now, na, we know. अभी भी कितने केन्या वगैरह में इतने इंडियन. हाँ. So my dada. Proper communities है और they celebrate Ganpati and all that. I've seen videos. My dada was in the island of Zanzibar, and my अफ्रीका में तेरे great grandfather थे great grandfather. और उनकी वाइफ. Even my dada stayed. वो टाइम पे अफ्रीका कैसे पहुंचे? पता नहीं. He was the only doctor, one of the only doctors on that At island. that time, I wonder how वो टाइम पे बन भी कैसे जाते थे डॉक्टर? And my dadi was in Uganda. Can you imagine? फोन नहीं है कुछ नहीं है. You have to read this boring ass books. Picture तो दूर की बात है. And then yeah. And you become doctor. मतलब he must truly love. And then you're one of the only doctors on the island, so you have to look after everybody. And it becomes hard as a job. Hats off भाई ये जो great grandfather है. हाँ तो तेरे डैड के 2 क्लिनिक है. ये दोनों Santa Cruz में ही हैं. So he moves between both the clinics. Yeah, so the one in Santa Cruz Market is more like charitable, Oh. and all his major surgeries, because he's an implantologist, he does implants. Oh. So that he does in the other clinic. Dentists in Mumbai. There are so many. No. Every corner. And they are so busy. They are. They Every are corner. so fucking busy. क्यों इंडिया में कोई दांत का ख्याल नहीं रख रख रहा है. किसके सामने? हाँ रख रहा है. कितने बिजी होते हैं डेंटिस्ट. यू हैव लाइक वेयर मैं जब भी डेंटिस्ट के पास गया हूँ वी हैव बीन वेटिंग फॉर एवर. इट्स लाइक फुल. एंड वंस यू आर एन एस्टैब्लिश्ड डेंटिस्ट तो खत्म. It takes time though to become that established. My dad used to work insane hours when I was young. हाँ. He would go ऐसा around 10 o'clock in the morning to work, come back at 6 o'clock, have lunch. Go back. What kind of lunch at 6? I don't know. Go back and come back at like 1 o'clock at night. Shit. And people would go to him at 1 after corporate job people and all. And he would stay जब तक लोग आ रहे back to back. I've seen established dentists की खतरनाक गर्दी होती है. Now he has other dentists who are working with him and they are planning to like form a little Team and and all. structure. But that time though it was. He all by himself. One clinic obviously वो Yeah. time पे. And now 2 clinics and he's got other dentists Yeah, and as he's well. opening one more. So the one will shut and it's moving to another place now. Okay. सही Yeah, है. he's got other dentists. They did their internships under him, they became dentists, and now he's getting them in his team. Now he can actually not retire, just become a manager. Like just Yeah, it's becoming like he's delegating now. You know what, delegating. like what cases he'll do, what cases somebody else. all will the hard work is done. And your mom is obviously she's not working as a gynac anymore. She's working as a gynac, but in lifestyle now, like Yeah, in my VLCC. sister Yes, worked with her. my mom
Yeah, she was My telling Shalaka, sister. na? Shout out to Shalaka. Yes. Yeah. देखो नहीं पता था. We discussed this in front of him only in Port Lincoln. Sleeping maybe. That. In Port Lincoln, you were something else, not sleeping. हाँ नहीं तो what What? caffeine. Caffeine? हाँ तो but my sister moved to another place now. She works in a hospital. But how? What a coincidence. Yeah. कि they know each other and they work together. कैसे निकली ये बात? तुम्हारे से निकली. I think बात निकली. Mom works at VLCC. Or like, oh, my sister also. Lifestyle. That's a huge market. मेरी बहन मेरे को बताती है. It's very huge. And People now, are ready to spend and now तो they are giving those medicines ना to lose weight. Manjaro and this that. Manjaro और भी Ozempic. Ozempic is not Indian, I think. कुछ और. But Manjaro is a full-on thing. Makes you less hungry or something. Yeah, but side effects होते हैं उसके. Yeah, but you have to be. That's why the doctors only give it, na. And there are criteria you have to view. ऐसे ही they won't give. They won't give and पूरा planned होता है and heavy side effects भी होते हैं but you will reach your goal. वो do you know that stand-up comedian? Aishwarya Mohan Raj. I saw the video. Funny video, good video, good but video. so informative. Very उसमें. honest. Very honest. वो वीडियो को देख के मुझे लगा ऐसे ऑनेस्टली बात करनी है भाई दुनिया के सामने क्या और पर वो सही बोली. बाप बोली. मैंने देखा था वो. मस्त वीडियो ही मस्त है. तो फिर माय फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ फर्स्ट टाइम आई सॉ यू वाज व्हेन वी वर इन अर्बनिस्ट. पता नहीं तू कैसे आती कि कौन दोस्त बना तेरा इस पुराने That's अर्बनिस्ट a में. very funny story. हाँ. You want to know where it all started from? Yeah. I went Why for were you coming to our urbanist? I went to an Indian meet and greet Indian meet and greet. in Uni Adelaide. Okay. There I met Heloise and a friend named Michael. Michael is Indian. Through him, Catholic. I met Hiren. He was Hiren's housemate. Oh. And through Hiren, I met everyone else. And then I started coming to Urban. Oh. Heloise से पहले मिली तू वहाँ पे. Okay. My first memory of you was once मैं ऐसे ही first floor पे था and I think you had become a part of the group. और तू लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट के बाहर पता है वैसे बैठने का था. हाँ. वहाँ पे तू एकदम अपने एकदम अनरेडी बिखरे हुए एकदम casually you were there. Yeah. So I knew that you were part of the group. I was not a part of the group. I was obviously Yeah, you close were, friends with yeah. everyone. So that's when I first saw you. ये कौन है? नहीं Yes. लड़की. I would walk there and then walk back home at 4 o'clock. सब टाइम पास करके. ठीक है बुरा थोड़ी बोला हाँ, हमने. कुछ नहीं बोल रहे सब कितने अच्छे लोग हैं. बहुत सही. हेलोइस कैसी है? ठीक है, मेरी इतनी बात नहीं हुई है उससे. दूर हो गए. हम्म, पहले तुम लोग तो ऑब्वियसली कितने क्लोज फ्रेंड्स. फिर वो तो अभी इधर है ना ब्रिस्बेन. हाँ. अभी ठीक आई है, थिंक next आई लेट topic. हर नो. क्या लेटर अभी हम जा रहे हैं ना ब्रिस्बेन. अच्छा मिलोगे. आई कांटेक्ट हर. मिलो. हम भी मिले थे उसको. मस्त पार्टी की तो हमने. फक क्या पार्टी की. एक आयरिश पब चले गए थे गोल्ड कोस्ट में एंड देन वी वर ड्रिंकिंग और क्या वाइब होता है यार. एंड समवन्स प्लेइंग ऑन द गिटार लाइक अ बैंड. द होल पब वाज बजिंग. आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे यूजुअली हाइंडली स्ट्रीट पे वी हैव गॉन टू डिच. This was first time like a band is singing and playing and everyone's drinking. Imagine the whole crowd drink on alcohol and what a party. तो वो हेलो इसके साथ पार्टी की थी. तो ब्रिस्बेन कब जा रहे हो तुम लोग अभी अल्ट्रा के लिए? ऑफ कोर्स तुम लोग कांटेक्ट करोगे उसको. आई डोंट नो अगर आयशा ने कांटेक्ट किया है. हाँ अरे मैं जेन्युइनली उसको बोलूंगी कि हम आ रहे हैं भाई, मिल लेना. मिलो. ये नहीं मिला है. नहीं ये नहीं मिला. आई थिंक आयशु ने उसको बोला है हम आ रहे हैं कि मिलने के लिए. ऐशु भी आ रही है तुम लोग के साथ अल्ट्रा. आयशा इज कमिंग. हाँ. और कौन है? आयशु, मनीषा, श्रेया, बहुत लोग हैं ब्रो. 12 लोग तो मैंने काउंट किया. नहीं फ्लाइट में साथ में कौन कौन जा रहा है? हम दोनों आयशु जा सब साथ में रहे हैं. जा सब साथ में रहे हैं आने के टाइम. No, Manisha's is and all. So then both of us and Aishu and going flight. Coming Okay. back is just both of us. ओके सही है. मजा आएगा अल्ट्रा. एक्साइटेड. आज ही मेरे आउटफिट्स मैं डिसाइड कर रही थी. हाँ
ऑफिस से आने के बाद या swimming टीमो जाने के टीमो पहले। का आया ना पैकेज आया. हाँ सही है भाई. इस बार तो ऑब्वियसली यू कैन लास्ट ईयर वी गॉट टू सी सो मच So राइट. now like little I've got like a glow in the dark वो Chinese fans जो हमें दे रहे थे ना वो भी शीन से मिला. सब कुछ शीन से मिलता है भाई. सही है ब्रो. हो गया. सही था ना. कितना टाइम बात किया हमने. कितने बजे आया मैं. 7:40 कुछ. इतना स्पेस है कि नहीं. कब से 45 minutes. Think this is the longest podcast. But देख, this is what I truly love कि हम अभी इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं. अब जाके it's so interesting to know your whole journey and to find out. Otherwise we all meet and okay he who. But this is सही है. सीखने मिलता है बहुत. Yes. 90.4 in 12. अरे भाई ये उसका भाई। टेक अवे है पॉडकास्ट से. पर मेरे को तो ये पता भी नहीं था इसको 90 आया और मैं बोल रहा हूँ शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. जो तो है बट 90.4 in 12 ICSE बोर्ड. सावन ने बहुत तारीफ कर ली है भाई. मैंने तो स्टार्टिंग के उसमें कर ली बट दैट्स जेन्युइन फ्रॉम द हार्ट. थैंक यू. सो वील जस्ट एंड दिस पॉडकास्ट आफ्टर वन लास्ट टॉपिक यस. which is obviously 2026 December 23rd. यस. Is that right? Yeah. क्या हो रहा है. शादी हो रही है ब्रो मेरी और विघ्नेश की. इसने शक्ल नहीं दिखाई ना अब तक. ठीक है कोई नहीं. You can sit next to like शादी के आजा time. अभी Come मेन यार. टॉपिक है. आजा आजा. अरे भाई you've done 2 podcasts with him and you're being shy now. I'll come down. Not 2 1. 2 1 The other one I was But sick. नहीं बट ऑल्सो हमने जो पॉडकास्ट किया वो इतना अच्छा नहीं था. वो ऐसे ही था. चुपुट पुटर था. गंदा माइक. टाइम पास बातें कर रहे कुछ. बट हाँ क्या शादी हो रही है यार. कॉन्ग्रेट्स. सो फकिंग हैप्पी फॉर यू गाइस. Thank you. तुम दोनों भाई यू गाइज आर लाइक वन यूनिट. लाइक फॉर मी ऐसा कुछ कपल्स होता है ना कि you just know that they are just one. You guys are like that. So congratulations. Vicky? I'll come. Why are you being shy? I'm not being shy. Why will I be Shy. shy? Oh, in a he's an podcast? extrovert. He's an Why? extrovert. I don't mind. He's Leave your phone. He's playing chess. Vicky, you can lose one game. I will. He's an extrovert until we hit the play button. Yes. Record Please button. don't mind him. He's playing chess, which he takes very seriously. Which is good. Yeah, we'll ignore him till. हाँ but क्या बोल रहा था मैं. शादी हो रही है. Yes, so happy for you guys. हम लोग का तो पता नहीं अभी क्या होगा. चलेगा. एटलीस्ट अगर यहाँ वाला कर लेंगे आने के बाद then क्या, you all can party? obviously be there. यहाँ वाला क्या पार्टी मैरिज. Function जैसा. यहाँ पे कहाँ साइन करोगे पेपर्स. यहीं करोगे ऑब्वियसली. Same. मैंने शिखर से बात की थी उसकी. हाँ यहीं करो. $300 में शादी हो जाएगी तुम्हारी. और प्रॉपर वेडिंग मिनी वेडिंग. वर यू देयर. She was मतलब यार अरे What? after इतना बात. नहीं You were there? कोर्ट मैरिज में यू केम राइट. नहीं, I was peeping from the outside. तो क्योंकि नहीं full हो- ये जो तूने But, नहीं बोला है. मैं ग्रैंडफेल में थी बस बाहर से पीप करके देख रही हाँ, थी ना क्योंकि तो फुल नहीं हो गया थी था मतलब. अंदर. नहीं थी बस बाहर विंडो से देख रही थी तो अंदर. सी दैट्स द थिंग क्योंकि आई रिमेंबर आई हैव सीन दैट वीडियो कोर्ट मैरिज वाला वेयर आई रिमेंबर फेसेस वेयर हु वाज सिटिंग. सो आई एम ट्राइंग. ऑब्वियसली तू हल्दी में थी Yes. और हल्दी का हमारा जो हुई क्यूट नहीं. फोटो है तेरा मेरा और शिखा का. वो मैं डालूंगा इस. हाँ As a thumbnail. तूने हाँ इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था ना क्यूट फोटो. यू आर लुकिंग लाइक अ किड ओनली. I was, yeah. I think I grew up when व्हेन लास्ट 3 years. 2020. Yeah, I met him. When I met him, I started growing up. I think little old. I Turned started. you into a woman. पर ये भी काफी ऐसा बॉयिश ही लगता था until 3 years ago. अभी क्या? Or is it the beard? I He's don't looking know. like a man now. Maybe it's a He beard. looks like a man. Can you like just? Maybe it's beard. Can you like lose the game I once? will. नहीं खेल ब्रो. उसका पॉडकास्ट है भी नहीं. ठीक है. वेदा पटेल पॉडकास्ट 9 ऐसे आना. But बैठ गया ना मेरे साथ. लोग बोल रहे हैं भाई. But it's good no. So अरे. I'm winning the match. नहीं तू खेल. हाँ तो फिर क्या बोल रहा था मैं. कि शादी हो रही. हाँ तू शादी में हमारी पीप कर रही थी वहां से. क्यों वर यू लेट और डिडंट यू गेट अ प्लेस. I think I got little late and there was no place and they had just shut it I think when I reached. कोविड की वजह से कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस तो थे. ओनली दीज मेनी पीपल अब कुड काफी बी. लोग थे बाहर. हाँ काफी लोग थे ना. हाँ. एक सीन भी हो गया था. आई थिंक रिस्ट्रिक्टेड था तो 20-25 लोग ही ऐसे कुछ हो सकते थे.
और फिर दानू तारा वाज वेरी क्लोज टू अस, Yeah. सो शी वाज लेट और मैंने लोगों को बोला था देखो भाई टाइम पे आना तो ये अंदर आने मिलेगा, तो दानू तारा थोड़ी लेट हो गई, मतलब लास्ट सीट फुल हो गई और वो अटक गई, बट शी वाज सो क्लोज टू अस दैट शी कुडंट स्टैंड आउटसाइड, शी हैड टू कम इन। तो भाई वाह अनाउंसमेंट हो रही है, लास्ट कौन आया था? तो दानू तारा की बैठ गई, शी वाज लाइक फक इट, तो वो जो होस्ट था शादी का जो है वो गिनने लग गया कि एक एक्स्ट्रा है, और दानू तारा थी वो, तो सब ऐसे हुए लास्ट कौन आया लास्ट कौन आया? फिर एक जन जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है उसको सबने पॉइंट किया, और फिर But who is she? I've never met her. Danu, no, she went before She you went, okay. came in. वी की एक्स। I mean, I'm not lying. Oh, I Yeah, think I've she's spoken. mentioned it. He's mentioned it. अरे हमने 1000 बार बात उसके की है जब हम सामने बैठ की के है, बात bro. कर रहे थे। Oh, she's the one. तो फिर हाँ वैसे हुआ, बट तू नहीं आ पाई, लेट हुई तू शायद, But बट हमने nothing- नीचे फोटोज खींचा है Yeah, but obviously। nothing can beat your Mehndi. मेहंदी और हल्दी तो I will never was forget such Shikha. a- Shout out Shikha. और तू मेहंदी, आई रिमेम्बर यू वर मैंने ड्राइंग एक द हाथ पे डाली है, मेहंदी, आयशु ने एक हाथ पे डाली है. इट वाज क्रेजी डूड। और आई हैव टोल्ड दिस बिफोर एज वेल, संडे को 4 PM को हमें लगा कि यार कल शादी हो रही है, लेट्स जस्ट कॉल आवर फ्रेंड्स, एंड दैट turned out to be one of the best nights of our lives, and Yes, in that small apartment. in that small apartment, memory. fucking so many people, everyone's the mess that was made, it was such a lovely mess to see कि जब तुम सब गए 3 बजे और शिका Shikha तो even though उसके हाथ पे मेहंदी बन रही थी, she was like passed enjoy. out, Yes. she was in the high spirits, और वो फिर as soon as you guys went 3 o'clock को she passed out, Yeah. and we had hundreds of messages on both our phones। तो मैं रात को 3-3:30 बजे और सुबह 8 बजे उठना था कोर्ट मैरिज के लिए, मैं रात को 3-3:30 बजे दोनों के फ़ोन से थैंक यू लिख रहा हूँ और आसपास देख के खुश हो रहा हूँ। हर जगह समोसे पे पैर पड़ा है किसी का, ओ भाई। और बोतलें तो इतनी बोतलें, 2 कार्टन बड़े बड़े लाए थे, वो सब बोतलें ऐसे ही पड़े थे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मैच। बट हाँ सोच 3 घंटे पहले हमारे दिमाग में आया, एंड एवरीवन वाज सो काइंड इनफ टू, सबका इतना खुशी से रिप्लाई आया रात को होता है। Yeah. The संडे night शाम को, before एंड there. एवरीवन शोड अप, फट से एकम जाके सब लेके आए, बट बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई विश तू अंदर भी आती, क्योंकि अंदर आई हैव द वीडियो, आई विल शो यू समडे, वी विल प्ले इट टुगेदर। द मोमेंट ही स्टार्टेड सेइंग द थिंग्स, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, I know you got very emotional. इमोशनल, You cried. I I cried know like that. a fucking baby, but that was the best moment of my life, क्योंकि वो You're- शादी He cries almost every time he talks about Shikha. अरे because You remember the like last their one? journey has also When? been. जब बेबी का हुआ था, तो even then. अरे because Yeah. those are big milestones, no? yeah, and And because their journey has also been like that. yeah, so जो ये मेन वाली, I will always consider that first wedding the main one. India वाली obviously special थी, you came and family was there, it was great, but this one where we did it, and that was the most special। और जब वो बोल रहा है, I'll show you the video bro, best moment, कि रोने को भी मजा आ रहा है, फूट के रो, खत्म। इतने सारे लोग थे, I forgot कि कुछ शर्म नहीं आ रही है वो, but तुम्हारी शादी हो रही है, sorry, I got distracted। हाँ, क्या फिर दिसंबर में ना देखते हैं हम, Yes. हमारी तो लाइफ बदलने वाली है। Yes. Shout out, baby. ये तो बीप करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये Sorry, बीप हो I didn't जाएगा। mean to. ये मैं याद रखूंगा, ये तो बीप कर I'll दूंगा। message you also. Please be baby. हाँ, तो थैंक यू, Thanks for having me on your व्हाट अ podcast. ग्रेट कॉन्वर्सेशन, Yes, thank you. गुड टू नो यू After all these years. आफ्टर ऑल दीस इयर्स, बट आल्सो लाइक 2019 में आई, तू कब आई? मैं 2018 में 2018 में तू आई। फर्स्ट फ्यू इयर्स व्हेन मैं और शिखा कभी कभी आते थे उस ग्रुप में, we became close much later. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पहले ग्रुप में यू वर लाइक समवन देयर, हाय हेलो करते थे ऑब्वियसली, वी आर बोथ नॉट रूड पीपल, No, yeah. बट ग्रुप्स ही ऐसे थे। एक तो शिकार में हार्डली कभी आते थे, Yeah. उसमें इतने बॉयज इतने सारे गर्ल्स, Yeah. और बॉयज अपना कर रहे, गर्ल्स अपना कर रहे, तो घंटा हमारी कुछ बात होगी। No, but I'm glad of the timing of. And then after that also that another phase where I don't have many मतलब I know we were there in the same room, but ऐसा there was no connection, right? ऐसा कुछ एकदम I think great, timing was right, but like whatever. and then this guy came and And yeah, now he'll take credit for everything. You know him very well. credit वैसे
क्रेडिट नहीं Later मतलब you'll tell. क्रेडिट नहीं मतलब since the last 2 years great I can frankly call you guys like you guys are not friends to me. Oh. You guys यार are like sound family. रुला के रहेगा ना I think. But It's true. na, You guys are last not 2 like years friends. You guys are like family, and which is such a great thing. And we live close by as Thanks well. So. guys. How much we met? Like, how many Yeah, trips I think we did made last some 2 years? very big core Obviously, memories. This year we could. This year we didn't do much, but last because 2 obviously we years, have things. This year has just started. Yeah, that's what. 2025 we've done so much. But We went to some of Ultra, other we went to commitments, Rome. That's what I'm saying. 20 Last year was yes. crazy. And 2024 also 2024. we took a lot of trips, and we hung out a lot as well. We made some. Selkirk we did lot of memories. Lot of memories, lot of house hangings, Those- parties. House hangings that would turn into parties. पता नहीं कि आज 3 बजे तक नाचना है. होली खेल के पता नहीं वो रात कहाँ चली. was memorable. Fuck. होली शिका नहीं थी ना. आई ना वो बाद में आई. बाद में आई और और वो भी पार्टी. बहुत पार्टी की उसने बाद में आके भी. I was feeling bad that she'll miss it. एक तो हमने शाम को बहुत पार्टी की और फिर उसने बाद में भी बहुत पार्टी की. सेलकर्क मैं भी शिकागो स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना, सामने ही हो नॉर्थ फील्ड में. एवरी टाइम वी पास सेलकर्क एवेन्यू, लाइक सेलकर्क ऐसे बस नाम देखता हूँ हर सुबह. सेलकर्क बस दैट्स वो इट. भी दिन थे हमें. हाँ कितना वेजिटेबल्स खाए हम लोगों ने. भाई सेलकर्क ने सब देख लिया. हैशटैग वीगन पीस. Very much vegan. But yeah, excited for this new journeys now. We all are yeah, going. we are We'll make growing. different core We memories guys in now. Ultra this year. Yeah, fuck dude. But now we'll all like go into this different phase of our lives. We'll all Yeah. make different core memories in that. That's true. अभी थोड़ा सा break है and then 2020 next year we'll be back. But this year is exciting for so many reasons. For us, Yes. for you guys. शादी में तो तुम्हारे मजा आएगा. मोस्टली तो हम ऑनलाइन ही पर देखेंगे. यहाँ वाला कर लेंगे ना बड़ा पार्टी. वो शादी हो जाएगी. हाँ मेरे को यही बोलना था But that is कि वो कोर्ट मैरिज भी. September or something will plan. No. So I was talking to Shikha. We'll do it in such a way that I'll get the dates for as soon as we come back. I can start the process before we leave. That is also good. Correct. Or if you happen to plan that court marriage, that'll become one big wedding here only amongst us. So looking forward to that. Yes, for all those who can't make it. Thank Thanks for you. having us. Thank you, Me, thank you. not us. Not me, yes. Me.